Okay, we are going to start with example 3-2, in which this cylinder D is having a mass of 60 kg and is supported by the cables arrangement as shown to you in the figure. The system is in equilibrium. You need to determine the tensions or the forces in cables BA and BC of this force of this cable system. So आपके पास एक cylinder है जिसका mass आपको given है, which is 60 kg, and it is being supported by two cables BA and BC. You need to determine the tension in each and every cable as shown to you in the figure. Okay, so starting with drawing the free body diagram of this cylinder D. अगर मैं cylinder D की बात करूं तो इस सिलेंडर डी की फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बनाते हैं तो द वेट ऑफ द सिलेंडर वुड बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसको मैं से डब्ल्यू डी से रिप्रेजेंट करता हूँ. एंड वंस आई रिमूव दिस केबल कनेक्शन, बी डी जो केबल कनेक्शन है इसको मैं रिमूव करूंगा. तो आपने लास्ट टाइम देखा था कि जब जब हम किसी भी केबल को रिमूव करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट टेंशन फोर्स इन द केबल, एंड सिंस इट इज अ टेंशन फोर्स इट इज गोइंग टू बी ड्रॉन away from this cable. So इस tension force को मैं TBD से जो है वो denote कर देता हूँ. So the free body diagram of this cylinder is now complete. Now once the free body diagram is complete, so I'm going to apply the condition of equilibrium on this cylinder along the y-axis. क्योंकि आपके पास जो forces हैं वो y-axis के along हैं. I'm going to take positive y direction upward, and I'm going to apply the condition of equilibrium, which is summation Fy equal to 0. So once I am going to apply this condition, it means that TBD minus WD should be equal to 0. So I hope this equation is clear to all of you. Yes sir, it's clear. Chale. So from this equation we can write the tension in cable BD to be equal to the weight of this cylinder D, and that is equal to weight कितना होता है mg के बराबर होता है. mass आपको given है, g आपके पास 9.81 है. so accordingly this TBD would comes out to be 588.6 Newton. So this is going to be the tension in cable BD. Okay, next आप करेंगे क्या कि you need to draw the free body diagram of this ring B. अब next step में आप इस ring B के free body diagram जो है वो draw करेंगे. Now on this ring there are three forces which are acting. One is this tension in this cable which is TBC. इसको मैं TBC से represent करता हूँ, and it is acting at an angle of 45 degrees with respect to the positive x-axis. The second force which is acting on this ring B is this force which is being represented by TBA, that is tension in cable BA. So आपके पास TBA force आ गई है which is acting in cable BA, and its direction is being represented by this smaller triangle जो कि 3, 4, 5 उसकी लेंथ जो है वो given है. इसके अलावा भी कोई फोर्स एक्ट करेगी? इस पे वेट ऑफ सिलेंडर भी तो एक्ट करेगा. तो इसके ऊपर बेसिकली ये वाली टेंशन एक्ट करेगी जिसको हमने इससे पहले TBD का नाम दिया था, and as we have said earlier this TBD is basically equal to the weight of this cylinder. So now the free body diagram is complete. इस ring B के ऊपर तीन forces act कर रही हैं. One is TBC acting at an angle of 45 degrees. The other one is TBA जिसका angle आपको इस smaller triangle से पता चल सकता है. And the final force is the weight of the cylinder which would be acting downward. So this ring is being acted upon by three forces. I hope that the free body diagram of this ring is understood to each one of you. Yes sir. सर ये जो आपने आगे लिखा है ये क्या लिखा है? सॉरी ये समझ नहीं आ रहा. क्या मैंने जो लिखा है TBD equal to WD. यस सर, आगे क्या लिखा है? 60 into 9.81. देखें yes, वेट mg के बराबर होता है ना. mass आपको given है, उसको g से multiply yes. कर दें, you are going to get the value of weight. Okay, so now applying the conditions of equilibrium on this ring B after drawing the free body diagram. The conditions of equilibrium says that summation fx should be equal to 0. So what are the forces which are acting along the x-axis from the free body diagram of ring B? Can you identify those forces? Sir, TBC. Okay, इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा? Cos
cos 45 पॉजिटिव नेगेटिव? सर नेगेटिव। तो अगर आप गौर से देखें, मैं जब कंपोनेंट्स बनाता हूं तो TBC चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसके जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे वो पॉजिटिव x पॉजिटिव y। अगर मैं TBA की बात करता हूं तो इसके जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे नेगेटिव x एंड पॉजिटिव y, सिंस TBA लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो अकॉर्डिंगली TBC cos 45 और TBA का कौन सा कंपोनेंट आएगा? सर उसका भी इसको cos solve कर 4/5। तो उसका 4/5 आ जाएगा। आई होप कि अब तक तो ये स्मॉलर ट्राइंगल से आप सारे वाकिफ होंगे। जब ये स्मॉलर ट्राइंगल आए तो इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप x कंपोनेंट कर रहे हैं तो x एक्सिस के अलोंग जो छोटे ट्राइंगल की लेंथ है वो 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, so that would become 4/5। पॉजिटिव और नेगेटिव? सर नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन आएगा। जिस तरह अभी बात हुई थी, TBA जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सो इट शुड हैव अ नेगेटिव x कंपोनेंट। सो TBC cos 45 minus TBA 4/5 should be equal to 0. Let me call it as equation number 1. Applying the second condition of equilibrium, which says that summation Fy should be equal to 0. इसी तरह आपके पास जो y components आएंगे, they are going to be TBC sin 45, which is going to be a positive component, as well as TBA with a positive sign, और चूंकि y axis के along ये smaller triangle की length 3 है, so it would be 3/5 minus WD to be equal to 0. So this would be equation number 2. So आपके पास दो equations हैं। unknowns कितने हैं इसमें? सर 2। दो unknowns हैं। So you are going to solve these two equations for these two unknowns in order to find out the values of those two unknowns. So accordingly, जब आप solve करेंगे, the value of TBC would comes out to be 475.66 Newton. Similarly, the value of TBA would comes out to be 420 Newton. So these are going to be the values of tension in these chords BC and BA, which are being asked in the क्वेश्चन। क्लियर है रेक को? यस सर। चलें, अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, मे बी आप में से कोई एक जवाब दे सकता है। यहाँ हमने अगर जब मैं सिलेंडर डी की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा था, आई हैव शोन द डायरेक्शन ऑफ TBD टू बी एक्टिंग अपवर्ड, बट वंस आई एम ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पार्टिकल B, आई हैव शोन द एरो ऑफ TBD डाउनवर्ड्स। व्हाई इज इट सो? सर पॉइंट बी ऊपर है इस वजह से, और जब पॉइंट डी की आप बात करेंगे वो नीचे है TBD से। और सर ये वेट के बराबर भी है इस वजह से, क्योंकि वेट भी डाउनवर्ड है। देखें, जब हम लास्ट में जब डिस्कस कर रहे थे, हमेशा केबल जो है या रोप जो है उसमें जो फोर्स पॉसिबल होती है दैट इज द टेंशन फोर्स। और जब हम टेंशन की बात करते हैं तो द टेंशन फोर्स इज ऑलवेज ड्रॉन अवे फ्रॉम दैट पार्टिकल जिसकी भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो। तो जब आप वेट यानी सिलेंडर डी की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे, आपने इसको अवे फ्रॉम दैट पार्टिकल जो है वो शो किया था। इसी तरह जब आप पार्टिकल बी की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, हमेशा जो रोप की टेंशन है दैट इज गोइंग टू बी ड्रॉन अवे फ्रॉम दैट पार्टिकल बिकॉज इट इज अ टेंशन फोर्स। क्लियर है रेक को कि हमने ये क्यों इसके डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट शो किए दोनों फ्री बॉडी डायग्राम्स में? यस सर। Any other thing which you want to ask regarding this very simple example 3-2?